गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है रिक्यूज़ल ऑफ जजेस। पॉलिटी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एम आर शाह जो हैं उन्होंने अपने आप को गुजरात कैडर आईपीएस ऑफिसर संजीव भट्ट के केस में हेयरिंग करने से रिक्यूज़ कर दिया है। तो ये जजेस का रिक्यूज़ल क्यों होता है? खासकर जब कोई कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो तो जज जो है वो अपने जो है केस से जो है वो एक तरह से रिक्यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि जो है जज जो है वो बायस थे। ठीक है, तो जो हमारा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है उसका बेसिक प्रिंसिपल ये है कि कोई भी अपने खुद के केस में जज नहीं हो सकता। तो अगर कोई अपील फाइल की जाती है सुप्रीम कोर्ट में किसी हाई कोर्ट के जजमेंट में, और अगर वो पर्टिकुलर जज जो इस टाइम पर सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उस पुराने समय पर उसी सेम केस में हाई कोर्ट के जज थे, तो उस केस में भी जो है वो रिक्यूज़ल जो है वो जज द्वारा दिया जाता है। अब प्रोसेस क्या होता है? तो प्रोसेस तो यही है कि जज खुद जो है वो अपने आप को रिक्यूज़ कर लेते हैं, और कोई फॉर्मल रूल्स तो नहीं है, लेकिन रंजीत ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि बायस नहीं आनी चाहिए आपके जो है परसेप्शन में भी बायस नहीं आनी चाहिए। लोगों को नहीं लगना चाहिए कि ये जो है जजमेंट जो है वो बायस थी, क्योंकि ये पर्टिकुलर जज जो है इन्होंने पहले भी ये केस सुना हुआ है या फिर इनका कोई कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तो क्या जज जो है वो रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं? ऑफ कोर्स, क्योंकि ये सारी जो है उनकी डिसीजन के ऊपर है, तो ऑफ कोर्स वो इसको रिक्यूज़ होने से जो है वो रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं। तो क्या उनको रिटर्न में जो है या कोई रिकॉर्ड देने पड़ते हैं कि क्यों वो किसी केस से रिक्यूज़ हो रहे हैं? नहीं, अभी तक उनको ऐसा कोई फॉर्मल रूल्स तो नहीं है। इंडिविजुअल जजेस के ऊपर है कि वो रीज़न्स देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं। 2015 में जब नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया, तो दो जस्टिस जो थे, जस्टिस क्यूरिन जोसेफ और जस्टिस मदन लोकुर, उन्होंने कहा था कि जो है जजेस को रिक्यूज़ल में जो के लिए जो है अपना रीज़न ज़रूर देना चाहिए, ताकि ट्रांसपेरेंसी बिल्डअप हो सके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। सिक्योरिटी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। न्यू सेट ऑफ रूल्स जो है वो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के लिए जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने निकाले हैं, जिसमें कहा है कि ऑल इंडिया सर्विसेज के ऑफिसर्स जो हैं वो एसपीजी पर डेपुटेशन पर आएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में, और अदर मेंबर्स ऑफ एसपीजी जो ऑल इंडिया सर्विसेज के नहीं हैं वो डेपुटेशन पर 6 साल के लिए आएंगे, जिसको जो है वो सेकेंड टेन्योर बाद में रिन्यू भी किया जा सकता है। एसपीजी का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में होगा, और कम से कम एक एडिशनल डायरेक्टर जनरल जो है ऑफ पुलिस के रैंक का पर्सन ही जो है या ऑफिसर जो है वो ही इसको जो है वो हैंडल करेगा। अब स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप क्या है? एलीट फोर्स है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है उनको प्रोटेक्शन के लिए बनाई गई है। 3000 जो है वो करंट इसका नंबर है, और सेंट्रल और स्टेट एजेंसीज इनके साथ कोऑपरेट करती हैं ताकि प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी फुल प्रूफ रह सके। अब एसपीजी एक्ट 1988 में पास किया गया था, जब पीएम को इंडिया में भी और अब्रॉड में भी जो है वो और उनके इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स को सिक्योरिटी दी जाती है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स जो हैं उनकी इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स जो अगर उनके साथ रह रही हैं तो उनको भी जो है वो सिक्योरिटी दी जाती है, और ये सिक्योरिटी जो है वो एक साल के पीरियड तक मिलती है उनको, जब वो ऑफ कोर्स ऑफिस होल्ड करना बंद करते हैं। तो अब 2019 में जो है इसमें एक्ट में अमेंडमेंट किया गया, उसमें कहा गया कि सिर्फ सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को जो है ये प्रोटेक्शन मिलेगी, लेकिन फॉर्मर पीएम्स को और इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स को जो है तभी मिलेगी अगर वो उनके साथ ऑफिशियल रेजिडेंस में रह रहे हों अगले 5 साल तक। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं टैक्स रूल्स फॉर ऑनलाइन गेमिंग। इकोनॉमी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सीबीडीटी जो है वो एक गाइडलाइंस के साथ आए हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर। तो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जो है ये न्यू सेक्शन डाला गया है, जिसमें कि इनकम टैक्स जो है वो नेट विनिंग्स ऑफ पर्सनस यूज़र्स अकाउंट के ऊपर जो है वो लगाया जाएगा। ये TDS 30% एप्लीकेबल होगा नेट विनिंग्स के ऊपर, और जब पर्सन विड्रॉ करेगा मनी एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर में तब जो ये डिडक्ट किया जाएगा। ठीक है, समझ लो किसी पर्सन ने एक एंट्री फ़ी दी 1000 रुपये की, और उसकी इनकम उसने जो जनरेट की जो है 40,000 की, तो 39,000 जो बनेगा उसके ऊपर जो है वो 30% का TDS कटा करेगा। अब जो है
अगर चाहे कितने भी आपके वॉलेट्स हों, कितने भी आपने जो है वो नेट विनिंग्स की हों ऑनलाइन गेमिंग के थ्रू, सब के ऊपर जो है आपको एग्रीगेटेड जो है वो 30% टैक्स देना पड़ेगा, TDS कटेगा। लेकिन ऑफ कोर्स अगर 100 रुपये से ऊपर की इनकम नहीं कर जनरेट कर पाए नेट विनिंग, तो ऑफ कोर्स TDS काटने की ज़रूरत नहीं है ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स को। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एंजल टैक्स। ये भी इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली इन्वेस्टर्स जो हैं 21 कंट्रीज़ के, उनको एग्जाम्प्ट कर दिया है एंजल टैक्स से। एंजल टैक्स क्या होता है? एक टैक्स लगाया जाता है अगर आप अपनी कैपिटल रेज कर रहे हो अनलिस्टेड कंपनीज से, और आपका जो शेयर प्राइस है वो फेयर मार्केट वैल्यू आपकी कंपनी से बहुत ज़्यादा है, तो जो आपकी बहुत ज़्यादा इनकम जो आप जनरेट कर रहे हो उसके ऊपर गवर्नमेंट आपसे एंजल टैक्स लेती है। ठीक है, 2012 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन कुछ एक्सेम्पशंस रखी गई थी। तो अनअकाउंटेड मनी को जो है वो रोकने के लिए एंजल टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया था। अब जैसे एग्जाम्पशंस क्या हैं कि स्टार्टअप अगर DPIIT द्वारा रिकग्नाइज्ड है, एलिजिबल स्टार्टअप है, तो जो है वो ये एंजल टैक्स नहीं लगेगा। और अगर एग्रीगेट अमाउंट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम जो है वो स्टार्टअप 25 करोड़ से ऊपर नहीं है, तो भी जो है ये नहीं लगता है। और एंजल इन्वेस्टर्स भी जो हैं, अगर वो उनके ऊपर ऐसा टैक्स लग रहा है तो वो 100% टैक्स एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं, अगर उनकी नेटवर्थ 2 करोड़ या फिर इनकम जो है वो 25 लाख जो है वो उससे ज़्यादा नहीं है पिछले 3 फिजिकल ईयर्स में। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं डल लेक। इन्वायरमेंट के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। थाउजेंड्स ऑफ फिश जो हैं डल लेक में, उनकी डेथ हो गई है बिकॉज ऑफ फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर। तो डल लेक जो है वो श्रीनगर में है, आपको बताया, जो कि समर कैपिटल है जम्मू कश्मीर की। और 26 स्क्वायर किलोमीटर का ये एरिया है, नेचुरल वेटलैंड है, और इसमें ही जो है आपके फ्लोटिंग गार्डन्स भी आते हैं। वेटलैंड जो है वो ये आपका जो डल लेक है, जो ये 4 बेसिन्स में डिवाइडेड है, गगरीबल, लोकुद्दल, बोरदल और नागिन। ठीक है, तो इसमें 2 आइलैंड्स हैं फेमस। एक तो लकुद्दल में जो है रॉफ लैंक, जिसको सिल्वर आइलैंड भी कहते हैं, और दूसरा है बहुत ही फेमस चिनार आइलैंड, जिसको सोन लैंक भी कहते हैं। ठीक है, तो डल लेक जो है वो एक फ्लोटिंग मार्केट के लिए भी बहुत फेमस है, जिसको राड कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर वेंडर जो है अपने शिकारा में ही जो है टूरिस्ट को अप्रोच करते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एक्सोमास TGO। तो ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक्सोमास ट्रेस गैस ऑर्बिटर जो है, उसने एनकोडेड मैसेज भेजा है अर्थ में फ्रॉम इट्स ऑर्बिट अराउंड मार्स। तो ये जो एक्सोमार्स ट्रेस गैस ऑर्बिटर है, ये जॉइंट मिशन है यूरोपियन स्पेस एजेंसी और रशियन स्पेस एजेंसी का। और बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मीथेन और अदर एटमॉस्फेरिक गैसेस जो मार्शियन एटमॉस्फेयर में है, उसको उसके ऊपर इंसाइट्स गेन करने के लिए जो है इसको लॉन्च किया गया था। और क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव है हाइड्रोजन पर, इसीलिए ये वाटर का भी सर्च कर रहा है वहाँ पर। और 2016 में इस मिशन को लॉन्च किया गया था, और इसको सोलर अरेज से जो है पावर किया जाता है, और उसके थ्रू ये चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं वर्ल्ड स्किज़ोफ्रेनिया डे। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ ने स्किज़ोफ्रेनिया डे मनाया है, और इसके बारे में अवेयरनेस जनरेट करी है। तो स्किज़ोफ्रेनिया एक क्रॉनिक सिवियर मेंटल डिसऑर्डर है, जो जनरली यंग एडल्ट्स को अफेक्ट करता है। 1 in every 100 पर्सनस जो हैं वो इससे अफेक्ट हो सकते हैं, और मेन जो है वो सबसे ज़्यादा इससे प्रोन होते हैं। पर्सन टू पर्सन वेरी करता है इसमें सिम्टम्स जो होते हैं। कई लोगों को बहुत ज़्यादा सिवियर सिम्टम्स भी हो सकते हैं, जैसे हेल्यूसिनेशंस, डिल्यूजन्स, थॉट डिसऑर्डर, लॉस ऑफ मोटिवेशन भी होता है कई लोगों में, लॉस ऑफ इंटरेस्ट होने लग जाता है, अटेंशन प्रॉब्लम्स आती हैं, कंसंट्रेशन प्रॉब्लम्स आती है, मेमोरी में प्रॉब्लम्स आती हैं। अब रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं? जनरली कई बार तो ये देखा गया है कि फैमिली में ही रन करता है। ठीक है, कुछ जेनेटिक जो है प्रॉब्लम्स की वजह से ये फैमिली में रन करता है, लेकिन कई बार पर्सन के इन्वायरमेंट के ऊपर भी फ़र्क पड़ता है। फिर कुछ केसेस में देखा गया है कि ब्रेन एरियाज जो हैं उनके कुछ पर्टिकुलर साइज़ उसमें जो है फ्लक्चुएशन जब होता है, तो भी जो है ये ब्रेन के स्ट्रक्चर की वजह से भी जो है स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है। कोई क्योर नहीं है इसका। एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस दी जाती हैं, या फिर कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी या सपोर्टिव साइकोथेरेपी के थ्रू ही जो है वो सिम्टम्स को रिड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार।
गवर्नेंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सोशल इश्यूज़ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने नॉमिनेशंस इनवाइट किए हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए। अब ये जो पुरस्कार है, ये चिल्ड्रन जो हैं एक्सेप्शनल एबिलिटीज़ वाले, उनके लिए उनको रिकग्नाइज़ करने के लिए दिया जाता है। ब्रेवरी में, स्पोर्ट्स में, सोशल सर्विस, साइंस, टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट और अदर्स में। एज लिमिट अगर हम देखें तो 5 से 18 साल है। और एक जो है 2 तरह के अवार्ड होते हैं। एक होता है बाल शक्ति पुरस्कार, जिसमें चिल्ड्रन जो है उनकी खुद की आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट के लिए उनको जो है अवार्ड दिया जाता है, चाहे वो इनोवेशन की फील्ड में हो, स्कॉलस्टिक कोई उनकी अचीवमेंट हो, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर। एक होता है बाल कल्याण पुरस्कार, जो इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस दोनों को दिया जाता है अगर उन्होंने चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड प्रोटेक्शन और चाइल्ड वेलफेयर की फील्ड में काम किया हो तो। नेशनल लेवल सिलेक्शन कमेटी होती है जो कि मिनिस्टर या फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट हेड करते हैं वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के। लेकिन अवार्ड जो है वो दिया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा हर साल जनवरी में। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, 8th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नीति आयोग। दिस टॉपिक इज, ये टॉपिक जो है आपका एक और आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। पीएम मोदी जो है वो 8th गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग को जो है होल्ड करेंगे आज। और इसका थीम रहेगा विकसित भारत एट 2047। 8 प्रोमिनेंट थीम सिलेक्ट किए गए हैं, उसके ऊपर डिस्कशंस की जाएगी। अगर हम गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग के बारे में देखें तो इसमें पीएम होते हैं, चीफ मिनिस्टर्स होते हैं यूनियन टेरिटरीज़ के भी और स्टेट्स के भी, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं, वाइस चेयरमैन होते हैं, नीति आयोग के फुल टाइम मेंबर्स होते हैं और स्पेशल इन्वाइटीज़ भी होते हैं। 2021 में इसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है कैबिनेट सेक्रेटरीट के एक नोटिफिकेशन द्वारा। तो एक शेयर्ड विजन, नेशनल विजन को जो है वो इवॉल्व करने की एक जो है बॉडी है। और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, इंटरसेक्टोरल, इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन बढ़ाने के लिए जो है ये इसका काम करती है। 7 मीटिंग्स अभी तक इसकी टोटल हो चुकी हैं। पहली मीटिंग जो है वो 2015 में हुई थी। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, स्प्रेटली आइलैंड्स इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। एक रीसेंट रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि चाइना ने स्प्रेटली आइलैंड्स को जो है वो मिलिट्राइज कर दिया है। अब स्प्रेटली आइलैंड्स कहाँ पर लोकेटेड है? साउथ चाइना सी में, और ये मलेशिया के जस्ट ऊपर हैं, लगभग वियतनाम और फिलीपींस के बीच में। और इसको चाइना, ताइवान, वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस सभी किसी ना किसी तरह से क्लेम करते हैं। ब्रुनाई जो है वो डायरेक्टली टेरिटरी को तो नहीं क्लेम करता है, लेकिन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है इस एरिया का, स्प्रेटली रीफ का, उसको ब्रुनाई भी क्लेम करता है। अब यहाँ का क्लाइमेट ट्रॉपिकल है। सबसे जो बड़ा यहाँ का आइलैंड है उसका नाम है इतुआबा। टर्टल्स, सी बर्ड्स यहाँ पर जो है वो वाइल्ड लाइफ है इन आइलैंड्स में, और कोई परमानेंट ह्यूमन हैबिटेशन नहीं है। हिस्ट्री में अगर हम देखें तो फ्रांस ने, जापान ने, फिर चाइनीज़ नेशनलिस्ट गवर्नमेंट जो इस टाइम पर ताइवान में है, उन्होंने, और जो है मेनलैंड चाइना जो है कि कुछ लोगों ने जो ऑफ कोर्स जो बाद में ताइवान में चले गए थे, चाइनीज़ नेशनलिस्ट गवर्नमेंट बना ली थी, उन्होंने कभी ना कभी इसको कंट्रोल किया है। इसलिए सभी ये कंट्रीज़ अपना जो है वो इसके ऊपर एक तरह से रूल क्लेम करती हैं। So now let us see all these topics in English. So the first topic is recusal of judges. This topic is important for your polity section. So Supreme Court Justice M.R. Shah has refused to recuse from hearing a plea filed by former Gujarat cadre IPS officer Sanjeev Bhatt. Earlier, Justice C.T. Ravi Kumar has also recused himself from hearing a batch of appeals against the discharge of Kerala CM Pinarayi Vijayan in the SNC Lavalin corruption case. So, anyways, we do not need to know what is this, but we have to understand what is the process, or what is the issue of recusal of judges. So, whenever there is a conflict of interest, the judges generally withdraw themselves, and it is called recusal of judges, so that they do not want to give a perception that there was a bias while deciding this case. So basically, you know that the cardinal principle in due process of law is that nobody should be a judge in its own case. So it also happens when
an appeal is filed in Supreme Court against a judgment of a High Court, and if that judgment was delivered by the current Supreme Court judge when he was in the High Court, then of course the generally it has been seen that the Supreme Court judge withdraws from the case or recuses himself. So, what is the process for it? Currently, there are no formal rules, but the recusal comes from the judge herself and it rests on the conscience and discretion of the judge. In Ranjit Thakur versus Union of India case, the likelihood of bias is the reasonableness of the apprehension, and if the judge wants the perception to be fair, then generally the judge has to recuse. So, can a judge refuse to recuse also? Of course, the decision ultimately rests with the individual judge itself. Like in this case, we have seen that the judge has refused to recuse himself from this case. Do they have to give the reasons for in writing, or do they have to record the reasons for recusal? Currently, no formal rules exist for this thing. It is often left to the individual judges to record reasons for recusal. But in a verdict of 2015, when National Judicial Appointment Commission was declared unconstitutional, two of the judges referred to the need of judges to give reasons for recusal so that transparency can be built. So the next topic is Special Protection Group. This topic is important for your security section. A new set of rules have been issued for this SPG by Ministry of Home Affairs, and it has saying that officers of All India Services will be appointed to SPG on deputation by central government. Other members of SPG, of course, other than the All India Services, will be appointed on deputation for an initial period of 6 years. So SPG will have its headquarters in New Delhi, and it will be handled by an officer which is not less than the rank of an ADG. So what is SPG? It is an elite force which is specifically raised for the protection of country's prime minister, and it is assisted by central and state agencies to ensure foolproof security for the prime minister. So there is SPG Act also, which says that prime minister both in India and abroad will be given security, and his immediate family members also. Former prime ministers will also get this security, and their immediate family members if they are residing with them, but for a period of 1 year from the date on which they cease to hold the office. So the government amended the act in 2019, and now the protection will only be offered to the prime minister, former PMs, and their immediately family members residing with them at their official residence. So if their former PMs and their immediate family members who are residing with them at their official residence, they will be provided this security for a period of 5 years only. Okay. So the next topic is tax rules for online gaming. This topic is important for our economy section. So CBDT has come out with guidelines for TDS for online gaming platforms. So the aim is to track online gaming industry. So for that, a new section has been added to the Income Tax Act, and the TDS would be applicable at 30% of their net winning. Okay, so from any online gaming. So the online gaming platform will have to deduct this tax. So how will this net winning get calculated if a user has multiple wallets? Then of course aggregate of all deposits would be considered, and any withdrawal or balances from user accounts will be considered for deduction of TDS. And if the net winnings of the player is less than 100 rupees, then of course there is no need to deduct the TDS. So the next topic is angel tax. This topic is again important for your economy section. So Finance Ministry has recently exempted investors from 21 countries from the angel tax for non-resident investment in unlisted Indian startups. So angel tax is basically a tax which is levied on the capital raised via the issue of shares by unlisted companies, and if the share price of the issued shares is seen in excess of the fair market value of the company, then of course this entire transaction is seen as a profit for the company, and on that angel tax is imposed. Of course the aim is also to deter the generation and use of unaccounted money. Okay, so what can happen here is that I may start a company, and if I have to get
my black money converted, then what would happen is I would ask the any foreign investor to invest in my money in my company at a much inflated price. So for that, of course, with that, of course, my company investing in my company would whitewash the entire money, and I would have uh, this money as capital in my company. To deter this, government has introduced this angel tax in Finance Act of 2012, and there are certain exemptions also. If the startup is recognized by the DPIIT as an eligible startup, then of course the investor do not need to pay this angel tax. And if the aggregate amount of paid up share capital and share premium of the startup is not more than 25 crores, of course in that case also it is exempted. And if angel investors and for angel investors, if the amount of investment does not exceed the fair market value, uh, and they can also claim 100% tax exemption if they have a net worth of 2 crore rupees or an income of 25 lakh rupees in the last 3 years. So the next topic is Dull Lake. This topic is important for environment section. So thousands of fish in the Dull Lake have died due to sudden fluctuation in temperature in the region. So Dull Lake is located in Srinagar, and it is part of the natural wetland, and it covers about 21.16 square kilometer areas, including its floating gardens. And this wetland is divided into four basins: Gagribal, Lokuddal, Bordal, and Nagin. So there are two main islands: Raw Flank, that is also called the Lakuddal, and second is the very very famous one called Chinar Island. So Dull Lake is a very popular floating market also, where vendors generally have their own shikaras and they approach tourists. So the next topic is ExoMars to TGO. This topic is important for your science and tech section. So European Space Agency's ExoMars Trace Gas Orbiter has recently flashed an encoded message to Earth from its orbit around Mars. So this TGO is a first in series of joint missions between the European Space Agency and Russian Space Agency, and the aim was is to ensure rather a better understanding of methane and other atmospheric gases in Martian atmosphere. It was launched in March 2016, and it is meant to test technology for future missions. And it is powered by a pair of solar arrays also. So the next topic is World Schizophrenia Day. This topic is important for social issues. Department of Empowerment of Persons with Disabilities have commemorated schizophrenia and to generate awareness about it. So schizophrenia is a chronic severe mental disorder which generally affects young people, especially men. And what are the symptoms of it? It can differ from person to person, and generally symptoms can be as strong as hallucinations, delusions, thought disorder, but it can also be having negative symptoms like loss of motivation, loss of interest, or even cognitive symptoms like problems in attention, concentration, and memory. So why does it happen? It could be genetic also. Sometimes it runs in families, and it could be environmental also. Some person's environment develops this schizophrenia for him, and there is also another instance when there is a difference in the brain structure and its function. Then also in that case, schizophrenia may develop. There is currently no cure for it, and antipsychotic medications are generally given along with cognitive behavioral therapy and supportive psychotherapy. So the next topic is Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar. This topic is important for our governance section and social issues also. So Women and Child Development Ministry has recently invited nominations for Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar. It is given to recognize the exceptional abilities of children and their extraordinary recognition of achievement in the field of bravery, sports, social service, science and technology, environment, and others. So generally, they are given these awards are given to children who are between the ages of 5 to 18 years. There are two kind of awards. First, of course, is the Bal Shakti Puraskar, which is given to that child
or children who have made exceptional achievements in the fields of innovation, scholastic, sports, art and culture, etc. But there is also Bal Kalyan Punaskar, which is given to individuals and institutions who have made contribution in the field of child development, child protection, and child welfare. So, a national selection committee is there, which is headed by the Minister or Minister of State of the Women and Child Development Ministry to finalize the names of these awardees. But these awards are given by President every year in January. So the next topic is 8th Governing Council meeting of Niti Aayog. This topic is important for your governance section. PM Modi will preside over the 8th Governing Council meeting today of Niti Aayog, and the theme of this meeting will be Viksit Bharat at 2047. So there will be 8 prominent themes along which the discussions would occur, and the Governing Council of Niti Aayog comprises of the Prime Minister, Chief Ministers of all states and union territories, Lieutenant Governors of Union Territories, ex officio members, Vice Chairman, Niti Aayog as full-time members, special invitees, and it was reconstituted recently in by Cabinet Secretariat's notification in February 2021, and it is the premier body which is tasked with a shared vision of or a national vision. It also promotes cooperative federalism, discusses intersectoral, interdepartment cooperation, and so far 7 meetings have uh, happened of the or 7 meetings have been hosted by the governing council, and the first meeting of this council took place in 2015. So the next topic is Spratly Islands. This topic is important for your international relations. A recent report has highlighted that Chinese military has militarized this entire Spratly Islands into strategic military outposts. So these islands are located in the South China Sea. They are a group of about 100 small islands or reefs. They are located north of Malaysia, roughly between Vietnam and Philippines. So China, Taiwan, Vietnam, Malaysia, and Philippines all have some form of claim over this territory. Brunei does not have a direct claim, but it of course claims an exclusive economic zone around this territory called the Spratly Reef. So generally, the climate here is tropical, and its largest island is the Ituaba. Turtles and seabirds are the only wildlife in these islands, and there is no permanent human habitation here. From France to Japan to Chinese nationalist government of the mainland China, which now is called Taiwan, all have held this islands in some time of the history. So now all of them have some or the other forms of claim over this area. So these were our topics for today, and there could be no class on Monday because of the prelims exam tomorrow. And for those who are preparing for prelims, my very best wishes to you. Hope that you will have a very good exam tomorrow. We'll meet next time on Tuesday now. Until then, goodbye and take care.